families are vaccinated. So, and we are moving towards the 100% mark very soon. And we are encouraging everyone who have not yet taken the vaccine to take vaccines so that they are safe, their families are safe, and their environment around them continues to be safe. The pandemic, of course, has had its challenges. It has had its impact on the economy. The economy suffered both in India as well as all over the world. We in 17, 18, 18, 19, 19, 20 was a tough year as it is. And fueled by the economy, fueled by the pandemic, we got into more pressure during the last financial year. But despite that, I think we have come out stronger. We have positive cash balance in the company. We have increased our cash flows. We managed to control costs. We managed to keep an eye on working capital management. And as a result, we have been overall cash flow positive for the year. We, after a spell of few quarters of negative negative profitability, we are back into profit zone. We had to make a lot of provisions on account of write-downs of inventories, be it raw material, be it finished goods, be it work in progress. But all that seems to be behind us because as we speak, today we are selling at a price which are profitable. Even at current costs, there is margin. And going forward, we continue. We hope this margin will continue and perhaps there is a scope for expansion. The steel industry, which is our main user industry, is going through unprecedented times in terms of growth in profitability, volumes, prices. I think ultimately we should get some benefit of this change in the steel sector. The fact that China has been insisting on going more green and China exporting exports of steel have been calibrated, I think that should augur well for us as well, for the people who are making electric steel globally and consequently graphite electrodes for them. So I think that's for broadly the graphite electrode business. Our subsidiary in Germany did not do well. They made more losses last year. In fact, they are still in red, but that is substantially because of the low level of activity as well as the Eurozone being far more impacted as opposed to what we were impacted here in India. They are now looking at positive signs of improvement. They are looking at better prices, better capacity utilization, and the markets are looking north. So hopefully from third quarter onwards, the German subsidiary should start also giving positive contribution. As regards other divisions are concerned, the equipment division under the circumstances have done well. The coke business did well. The only division which did not, the steel division had a good turnaround and is expected to post a robust performance even in the current year. So overall, things are good. The pipe business unfortunately continues to languish because it is mostly dependent on government orders, infrastructure projects, which have been slow in terms of order booking and execution. So I guess we will have to wait for some more time for that business to turn around. I think this overall summarizes the situation of the company last year, but I can only tell you that we have been conservative. Our balance sheet had not come under pressure even in difficult times, and in good times, of course, all our peers' balance sheet became robust, and we continue to build upon that and look for opportunities for growth in the future. Thank you. Now, I would like to invite the first speaker, Mr. Jayadi Bakshi. Mr. Bakshi, would somebody let him in? Yes, sir. Just promoted him. Just a minute. Good. Jaydeep, sir, please say something. Yes. Good morning, Mr. Bangu.
Good morning. Another board of directors, myself Jayadi Bakshi, connecting from the city of Kolkata. Thanks to our company secretary for giving me an opportunity to express my views. Our revenue from operation has been come down because of this unprecedented year in which the whole nation as well as the globe is passing. We understand the situation in which every industry is passing. So I hope we should learn from our experiences of the past to counter the future wave which is expected to fall in. So regarding the halt in the manufacturing activities and also the construction sector and also the real estate, how we are thinking of earning more revenue in the future. And also the steel industry is now going, is on the upside now. What will be benefited for our company? Regarding inventory, what are we thinking of? Because in the future, how can we cope with the situation? And also the loan moratorium passed on by the RBI and the lower interest rate, how has the company been benefited by this? So what is our order position for from the government authorities regarding the glass reinforced plastic pipes? What is because of this infrastructure growth? And regarding the high-speed steel manufacturing capacity in Odisha, what is the present situation and also the order status for different cutting tools or different? And regarding, sir, the waste management, what is our thought process and also for carbon reduction and also the safety standards which we are maintaining? Nothing to add more. I hope our company will rise future under your leadership and will give us a handsome dividend in the coming years. Thank you, sir, and all stay safe. Thank you. Can I move to the next speaker, Mr. Bimal Krishna Sarkar? Bimal sir. Hello. Am I audible? Yeah. Hello. Yes. You are audible. माननीय अध्यक्ष जी, अन्य डायरेक्टर बिंदु, कंपनी सेक्रेटरी, शेयर होल्डर्स, सर, पेंडेमिक सिचुएशन में इस परिस्थिति में हमारा कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कम हो गया है और फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट हम लोगों को इस बार इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट। एक्सपोर्ट जो बिजनेस है वो 30% कम हो गया है, कारण ये सारे चीज मेरे को लगता है पेंडेमिक सिचुएशन में इस चैलेंजिंग ईयर में ये ऐसा हुआ है और डिविडेंड इतने वजूद भी पेंडेमिक सिचुएशन है और हम लोगों को 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर डिविडेंड मिल रहे हैं। ये इसके लिए मेरा मैनेजमेंट कमेटी बांगुर जी आपका टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर सीएसआर कमेटी जो अच्छी काम किया है इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ। 38.16 करोड़ का स्पेंड करना था एज पर रूल्स, बट 35 लाख अप्रोक्सीमेटली हम लोग स्पेंड किया है। सर सबसे अच्छा लगा है जो इस बार हमारा जो कंपनी जो पेंडेमिक सिचुएशन में एक गुड रोल लिया है, जो हम लोग जो सैनिटाइजर और किट्स एवं जो सैंपल सब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया है हमारा कंपनी से, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं और रिक्वेस्ट करूंगा जो थर्ड पेज आने वाला है तो जो हम लोग सीएसआर में खर्चा करते हैं इस बार थोड़ा ये पेंडेमिक सिचुएशन में थोड़ा बढ़ावा दीजिएगा, जो साधारण जो गरीब लोगों को ये सुविधा मिले। सर एक ट्री प्लांटेशन ये बहुत बड़ा काम है, तो वो हम एक रिक्वेस्ट करेंगे जो शेयर होल्डर जो लोग हम लोग स्पीच देते हैं वहाँ शेयर होल्डर है, इन लोगों को थोड़ा ये ट्री प्लांटेशन में हम लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा तो हम लोगों को अच्छा लगेगा जो हम लोग ट्री प्लांटेशन में हम लोग भागीदार हो रहे हैं। सर देखिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जितना रेजोल्यूशन है हमारा फैमिली का मेंबर जो है जो शेयर होल्ड कर रहा है सारे हमारा रेजोल्यूशन फेवर में ऑलरेडी ई वोटिंग कर दिया है। सर देखिए एक चीज मैं जानना चाहता हूँ जो हमारा कंपनी में जो कितना लोग कोविड अटैक हुआ है और अटैक हुआ है नहीं है और कोई हम लोगों को छोड़ के चला गया कि नहीं, जो कोई हम लोगों को छोड़ के चला गया है मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग किया है तो अच्छा है, नहीं किया है तो
और एक मिनट का कॉन्फ्रेंस मीटिंग बनवा लीजिएगा, ये अच्छा रहा। हाँ सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर। आप लोगों को सबको सुस्त रहे और सावधान रहेगा। जब तक हमारा ये देश से ये कोविड-19 हट ना जाए तब तक हम लोगों को सावधान रहना ही है। हम लोग वैक्सीन ले या नहीं ले, और हमारा कंपनी का सारे एम्प्लॉय को वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं है, थोड़ा इसको बता दीजिएगा। क्यों, ये कंपनी जो है एम्प्लॉय है, ये पिलर होता है कंपनी का। हाँ, तो ये इन लोगों को सबको वैक्सीनेशन होना चाहिए, और संभव हो तो इन लोगों को फैमिलियों का वैक्सीन हुआ है कि नहीं ये देखना चाहिए। सर, अब मेरे को आज और मुझे कंपनी सेक्रेटरी भी शिवा बहुत पहले से नोटिस भेज दिया, और हम लोगों को मीटिंग का पहले हम लोगों को बता भी दिया है कि आपको इसी टाइम घुसना है, ये करना है। जो अच्छा कोऑपरेट करने से उनको धन्यवाद देता हूँ। बांगुर जी, आपका टीम को सुस्त रहे, सावधान रहेगा, ये बोल के मेरा वक्तव्य खत्म कर लो। थैंक यू। Thank you. Thank you, Mr. Sarkar. Can I now call upon Mr. Sujan Modak? Yeah, you can hear me, sir? Yes, please. Yeah. Good morning, respected chairman, other board of directors and shareholders. I'm Sujan Modak. I'm calling from Calcutta. Sir, in this pandemic situation, that's to add more this pandemic situation and the subsequent world. Total globe में ये जो problem हुआ है वो तो हम देखे हैं, and we know the things has happened. But in this situation, our company's performance is really satisfactory. It is okay, it's good. I am at least, sir, happy. Sir, we have got dividend. Revenue has slightly gone down, but production has gone up, and CSR activity is also really good. So I have full faith on this efficient and strong management, and under your leadership, and I support all the agendas and done the e-voting also, sir. Sir, I have 2-3 questions. First of all, one thing I have to congratulate management that vaccination of 95% of our staffs, as you said, has been done. So it's very, very nice, very, very fantastic job. Sir, pollution control is my question. So what are the things you are planning for that? Because the pollution should be controlled and all. So is any new initiative you are going to take? So if you please elaborate us. And emission and waste management, carbon emission and waste management, on that if you throw some light, sir. Sir, on page number 58, the pending dispute, excise duty and customs duty, sale tax, is a huge amount pending. So please throw some light and why it is pending for such a long, if you can give slight light on that. China effect, we know it, and you have elaborated us, so it's good. So if China effect continues, so that our steel industry may perform better, and for that our company is also grow definitely. Sir, Shiva, Mr. Shiva, B. Shiva is a very old person, and I mean so many years of experience with us. So very nice, sir. Shiva ji, आपको नमस्कार सर, आप कैसे हैं? आपको सर मिलते तो है बीच बीच में, लेकिन 2 साल से मिले नहीं, तो थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत अच्छा हम लोगों का साथ कोऑपरेट किया है, सब कुछ सही टाइम पे भेज दिया है. थैंक यू वेरी मच. So I finish here with the hope of next year with better result and COVID-free world. Thank you, sir. Thank you. Can I now call upon Mr. Kirti Shah? Not available. Not available? Okay. Then we call upon next person, Abhijit Panda. Will somebody get him in? Yes, sir. He's promoted. Abhijit, sir, please unmute yourself. Abhijit, sir, please unmute yourself. Yes. Can you hear my sound?
Yeah, we can hear you now. Acha. Thank you very much, respected chairman and board of directors and our own fellow shareholder. Sir, as I very satisfied with our company performance in this pandemic situation. सर, जो भी कंपनी का जो बैकबोन होता है वो उसका कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी का जो लेबर है वो होता है। तो मेरा कहना है इस पैंडेमिक सिचुएशन में अगर किसी एम्प्लॉय का डेथ हुआ है उसके में कंपनी उसका कॉम्पेंसेशन किस तरह से किया है और आपका कंपनी में हाउ मेनी वुमेन्स एम्प्लॉय है और हाउ मेनी डिसेबल पर्सन है और सर देयर इज एनी न्यू विद द इंडियन रेलवे टू योर कंपनी और वेस्ट बंगाल में आपका जो रीजनल की मेन ऑफिस है तो इसके लिए हम चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल और कोलकाता की ब्यूटिफिकेशन के लिए कंपनी अगर कुछ करे तो वो अच्छा होगा और हमारा जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उसके लिए आपने जो डिविडेंड दिया है, ठीक है, डिविडेंड 5 रुपीज इज ओके दिस ईयर। अगर कंपनी हायर ग्रोथ करते हैं उस पे तो हमारा पूरी यकीन है हमारा कंपनी और भी आगे जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर आई होप डिविडेंड परसेंटेज इज इंक्रीजिंग और सर एनी प्लान टू राइज शेयर कैपिटल, जैसे आपका कोई कि राइट इशू आने का है कि नहीं, अगर आएगा तो अच्छा होगा। और अभी जैसे देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो हम चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल में आप एक तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का और एक तो एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए तो अच्छा है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल का आप इंडस्ट्रियल का बहुत ही अभाव है, तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लॉस ऑफ टैलेंटेड यंग पीपल है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और सर इन योर CSR एक्टिविटी इट्स क्वाइट सेटिस्फैक्टरी बट इट्स नॉट ए फुल्ली सेटिस्फैक्टरी। तो हम चाहते हैं कि जो पैंडेमिक सिचुएशन में जो पुअर पीपल है उसके लिए कुछ आप परमानेंटली कुछ करे, मतलब उसको एम्प्लॉयमेंट का अगर कुछ हो सके तो उसके बारे में। और सर कि हीमोफीलिया और थैलासीमिया इज ए जेनेटिक प्रॉब्लम, तो इसलिए मैं चाहता हूँ जो कि हीमोफीलिया और थैलासीमिया जो सोसाइटी है उनको आप कुछ डोनेशन दे, क्योंकि दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट इन द हीमोफीलिया एंड थैलासीमिया। तो जैसे रेस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट के नाते हमारा कंपनी का भी कुछ दायित्व होता है हमारा देश के सभी के माने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिल अप करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये भी आप थोड़ा सा देखें। और सर माइनॉरिटी शेयर होल्डर जैसे हम लोग कोलकाता को जितने भी है हम लोग तो आपका AGM हर साल अटेंड करते हैं, तो लास्ट ईयर और दिस ईयर हम लोग आपके साथ मुलाकात नहीं करना पा रहा है, तो हम चाहते हैं जो आपका कंपनी का जो एटलीस्ट स्पीकर शेयर होल्डर है उनके लिए कुछ अगर किस दीपावली या दुर्गा पूजा में कुछ गिफ्ट दिया जाए तो अच्छा होगा। ये कुछ बात नहीं, देखिए ये पैसे का कोई व्यापार नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगता है। जैसे आई एम ए एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे इन द विजिलेंस डिपार्टमेंट, तो जैसे मैंने आज की छुट्टी करके ये AGM का अटेंड किया, तो हमारा जितना भी स्पीकर शेयर होल्डर है वो भी अपना अपना काम छोड़कर आपका कंपनी का जो AGM को सफल करने के लिए आया है। तो हमें लगता है ये थोड़ा सा टोकन कुछ गिफ्ट देने से उसका भी और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए अगर सभी का तो अपना अपना काम है, तो अगर काम छोड़ कर कुछ भी कर रहे ठीक है, तो हमारा तो ये तो जरूरी भी है हमारा कंपनी और भी आगे आए।
तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज मेरा जो मोस्ट रिक्वेस्ट है, वेस्ट बंगाल के जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है उसको फिलअप करने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल में कुछ नया प्लान या और एक्सटेंशन ऑफ योर प्लान करें। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Mr. Panda. Can I now call upon Mr. SP Besania? Can you hear me? Yes. And see me also? There is no video. No. So please start your video. How do I start? Now it's come. Yeah. So they should give video connection immediately rather than asking for it. So I'm Aspi from Bombay. I'm a shareholder for many years, but I could never attend your AGM. So next year when the physical AGM start, please continue with the video conferencing. So during the year, profit before share of profit of associates and tax for standalone is 271 crore and consolidated is only 53 crores. That means subsidiaries have incurred a loss of 218 crore. So last year, loss of subsidiaries was only 27 crore. Why subsidiary loss has increased from 27 to 218 crore? Is this entirely due to German subsidiary? And again in Q1, there's a small profit. So how do you see the balance here for the subsidiaries? So I thank you for dividend of ₹5, which entails 100 crore outflow. So what is your capex requirement and how do you propose to finance it? So during the year, we have invested in debentures of 428 crores. Which companies you invested? So I appreciate your decision to invest in Sumitomo Chemical. It's a very nice company. Our company is net debt-free, for which I congratulate the management. So prices of graphite are dependent on what factors? Is it entirely China or is it due to cost of production or whatever? Please inform how the prices are determined and how do you see prices of graphite in the next 2 years? So thank you very much and all the best. Thank you. Can I now call upon Mr. Gautam Nandi? Gautam sir, please unmute yourself. Gautam sir, please unmute yourself. So please unmute yourself. Yeah. Hello. Yes, we can hear you now. Hello. Yes. Am I? Yeah, you are audible. Please go ahead. Am I audible? Am I audible, sir? Yes. And visible, sir? Yes. Yes. Sir, good morning and namaskar. Respected Chairman, Board of Directors, and my online fellow shareholders. Myself, Gautam Nandi, very old equity shareholder of Graphite India Limited. Sir, firstly, I like to give thanks to your secretarial department for sending me annual report and other necessary relevant papers through email well in advance. Sir, so specially thanks to our respected company secretary, Mr. B. Shiva, and his whole team for rendering good services to our minority shareholders. Sir, you are organizing your AGM through video conference for the second time, and I find it is a grand success. So thanks again, sir. Sir, my earlier speakers already expressed their views and covered most of the points regarding accounts and performance of our company. Therefore, I don't like to repeat it. Sir, a few years back, we had faced two big giants, GST and demonetization. सर, ये दोनों का इफेक्ट खत्म होते ना होते कोविड-19 का फर्स्ट फेज लास्ट ईयर हम लोगों को अटैक किया
And this year, third phase is going on. Each and every company is suffering very much. But I am very glad to see that despite a tough pandemic and a most challenging year, you are trying your best. Sir, ये पैंडेमिक पोजीशन में आप लोग का रिजल्ट इतना अच्छा हुआ, मेरा ख्याल से आई होप जो अभी नॉर्मल पोजीशन अभी होने वाला है, अभी जब नॉर्मल पोजीशन हो जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट और भी बहुत 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 अच्छा होगा, ये उम्मीद तो हम लोग का है सर. सर, I am very proud to be a shareholder of your company and I am very hopeful towards the prospect of our company. I have full trust with your strong management and therefore I have wholeheartedly support your all resolutions and already have casted my votes. Nothing to say more today, time is very precious. Looking forward with a positive outlook towards our company with good return and handsome dividend. May God bless you, sir. Stay safe, stay healthy. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, Mr. Nandi. Can I now call upon the last speaker, Mr. Santosh Kumar Saraf? हाँ, नमस्कार. हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, उपस्थित निवेशक सदस्यगण, मेरे शेयरहोल्डर भाइयों बहनों, जो आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू प्रेजेंट है, मैं संतोष कुमार सराफ कलकत्ता से बोल रहा हूँ. सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार. आशा करता हूँ आप हमारे जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी अधिकारीगण हैं और जितने भी उनके परिवार और जितने मेरे शेयर होल्डर भाई हैं, वह इस कोविड के अंदर में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे. सर, एक सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा डिविडेंड इस कोविड के टाइम में दिया, इसके लिए भी धन्यवाद दूंगा सर. एक इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे कर्मचारी की मेहनत के कारण हमें अवार्ड और रिकॉग्निशन मिला, तो उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे वो मेहनत करेंगे तो हमारी कंपनी को और भी आगे रिवार्ड और रिवार्ड मिलेंगे. सर, एक साथ मैं जानना चाहूंगा कि अपना कैपेक्स प्लान क्या है नेक्स्ट 3 ईयर के लिए, और अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में कोई क्या एस्टीमेट इस बार का खर्चा और कोई प्रोजेक्ट उसके अंदर में या नया प्रोडक्ट के बारे में कुछ है तो बताने का कष्ट करिएगा, और नया प्रोडक्ट अगर इस साल लॉन्च किए तो उसके बारे में बताने का कष्ट करिएगा. सर, एक साथ मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा सर कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ये भी बताने का कष्ट करिएगा सर, और लोकल फॉर वोकल के लिए और के भी क्या कदम उठा रहे हैं जिससे हमारे देश में आत्मनिर्भर बनाने का कष्ट करिएगा. सर, एक सर मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि जो हमारे ये सिंगल यूज प्लास्टिक है इसका यूज कम से कम हो, इसके बारे में क्या कदम उठा रहे हैं सर, ये भी बताने का कष्ट करिएगा सर. और सर, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपने क्या कदम उठाए बताइएगा सर, जिससे अपने फ्रेश वाटर का यूज कम से कम हो और कम से कम उसका यूज हो, बताने का कष्ट करिएगा सर. एक सर, जैसे मैंने कल भी पूछा था आपसे, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपका क्या कदम उठाया सर, क्या अपने जो प्लांट है या अपने जो रूफटॉप है वहां पे क्या आपने उसको सोलर पैनल इंस्टॉलेशन किया है तो बताने का कष्ट करिएगा सर. एक सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि अपने जो एम्प्लॉय है उनको तो वैक्सीन लग चुकी है सर, क्या उनके परिवार को भी आपने व्यवस्था की वैक्सीन लगाने की, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय जब काम करेंगे तो जाएंगे तो घर पे सर, अगर उनको परिवार को वैक्सीन नहीं लगेगी तो उनके अफेक्ट होने का चांसेस रहेगा. अतः बांगुर जी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि उनको कहिए कि अपने परिवार की भी वैक्सीन करवा ले. अगर वो मान लीजिए प्लेसमेंट प्राइवेट में नहीं मिलता तो उनको बोले प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज वैक्सीन ले लें, और उनका जो भी 12 से 13 रुपया जो भी लगता है वो हमारी कंपनी रीसम्बर्ड कर देगी तो अच्छा रहेगा सर. ऐसा जोड़ लीजिए आपसे रिक्वेस्ट है सर. एक सर, मैं जानना चाहूंगा कि अपने यहाँ जो मतलब वुमेन है सर, मैं अभी देख रहा था कि अपने यहाँ वुमेन जो है बहुत कम है सर, करीबन मैं अगर देखूँ तो 1748 एम्प्लॉय थे 31 दिन तक, और कैजुअल एम्प्लॉय थे 1477 तक.
उसमें से ह्यूमन एम्प्लॉय सिर्फ 22 है सर। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट दिया जाए, क्योंकि पहले हमारे मन में था कि वुमेन शक्तिशाली नहीं होती, लेकिन बागर जी मैं समझता हूँ अभी ओलंपिक में उन्होंने दिखा दिया कि हम कितने शक्तिशाली है। 115 किलो तक वजन उठा सकती है, बॉक्सिंग में भी फाइट करके लोगों को हरा सकती है, और कुश्ती में पटक सकती है सर। तो उनको कमजोर मत समझिए सर। तो मैं चाहूंगा अगर आप मौका देंगे तो फैक्ट्रियों में भी अपना हुनर वो दिखाएंगे सर। और अभी तो गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है वुमेन को दिन रात काम करने के लिए। रही अपनी सेफ्टी के बाद में, तो बात है मैं जानता हूँ सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत होता है सर, तो ये नोट कर लीजिएगा, जब वुमेन की संख्या ज्यादा होगी तो सेक्सुअल हैरेसमेंट अपने आप बंद हो जाएंगे। जैसे को एजुकेशन स्कूल के अंदर में गलतियां लोग बच्चे कम करते हैं, उसी तरह मैं सोचूंगा फैक्ट्रियों में वुमेन की संख्या बढ़ेगी तो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट केस है, और अपने को जो चिंता रहती है कि उम्र रहेगी पता नहीं क्या ब्लेम आएंगे नहीं आएंगे, इसकी भी संख्या अपने को दूर रहेगी सर। और ज्यादा समय नहीं लूंगा बाबर जी, आपकी लंबी उम्र की कामना कर दी की थी, आज दोबारा कर रहा हूँ कि आपकी छत्र छाया में और हमारे जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि फाइनेंशियल 2021 जो चल रहा है इसके अंदर में सब हेल्दी वेल्दी और प्रोस्पेरस और सेफ्टी के साथ में रहे, ये प्रार्थना करते हुए। और सर वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग काफी अच्छी अभी देखिए बॉम्बे से आसमानी साहब ने कहा था, और मैं कलकत्ते से आपसे बात कर रहा हूँ सर। और आपको होता है बरसात का मौसम है, बरसात में मुझे कितनी तकलीफ है आपको खुद ही मालूम है। मेरे को मालूम है जब 3 दिन मीटिंग करामती होती थी तो पानी भर जाता था, तो उस पानी में आपकी गाड़ी आती थी, हमें भी तकलीफ बन जाता। तो मैं चाहूंगा फ्यूचर में इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग कंटिन्यू देखिए, जिससे डायरेक्टर लोग भी, मैं देख रहा हूँ 6 डायरेक्टर पीछे दे रहे, वो अपने अपने जगह से अटेंड कर रहे थे, उनको ये आना पर नहीं, ये भी फायदा सर, कोई भी कहीं से अटेंड कर सकता है। समय न लेते हुए आप लोग से बहुत से प्रार्थना करते हो लंबी उम्र से आपको कंपनी के और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. I think all the speakers have spoken. I will try to respond to some of the questions. First of all, let me thank all of you who have spoken. You have given very valuable suggestions. You have complimented the management and the company. We are grateful to you. Some of you have raised concern about pending dispute vis-a-vis excise and customs. Of course, the disputes are long. The numbers are large. We are at it. It takes time to resolve them. And being a large company with multiple locations, it takes lot of time for many disputes to get resolved, but management is definitely pursuing resolution of each and every dispute. So please be rest assured. Regarding emission, pollution control, waste management, I think we are at the top of it. We have been investing money regularly in the company to upgrade our plant and facilities to become more green, and our endeavor towards this will continue regardless of the change in any circumstances. We have supported our employees who or their families have been impacted by COVID, and we will continue to do so till this pandemic is behind us. Of course, some of you have talked about dividend being good, and I think our dividend policy has been consistent that we would give a decent dividend subject to profits, and it's always linked to profitability. Last year there was no profit. Despite that, we gave 100% dividend, and this year we have the board has declared a dividend of 250%, which is subject to your approval. So we are all on the same page on this. As regards suggestion to go into steel manufacturing, I am afraid we are not keen to get into steel manufacturing because that's a different core industry. Right now, they're going through very good times. They've had their share of problems in the past. We would rather be a supplier to the steel industry than be a customer ourselves. So we would refrain from going into hardcore steel manufacturing. We are into specialty steel, which is doing well, and we'll grow that business. But we will not get into any direct steel manufacturing. We would rather continue to cater to steel industry. Our capex requirement is not very significant. We have been doing capex in upgrading our plants, changing old equipment with new equipments, and most of our capex
Of course, Durgapur is our biggest plant and most of our capex is directed there. So far as the question on debentures invested, yes, these are all companies which have high credit rating. We are not investing into any company where the rating is not comfortable or not even investable grade. Prices of graphite electrode in future, of course, nobody can predict this, but yes, we have had a trough. We have had a difficult time. We saw prices going south in a significant way. From those levels, it has improved significantly. And as we see today, the prices are on the upward trajectory. Now, how much it will move, when it will move, I think it's too many dynamics are at play in the market, and we are very watchful of that. And we will definitely take advantage of any upward movement in the market. Somebody talked about women employees. Let me assure you, there is no gender discrimination in the company. We encourage women employees, and if there are good candidates who want to take up employment in the company on merits, we are considering them from time to time, and we have no gender bias. As regards renewable energy is concerned, we are at it. As you may be aware that we are running a hydel plant in Karnataka for the last more than 20 years, very successfully. We have put up some solar panels, which are in terms of our overall power requirement is very small, but we continue to look at opportunities to get into more and more renewable energy, because we, being a power intensive industry, we would like to make it neutral in terms of our power cost versus our own generation of renewable power. I think I tried to address most of your questions. Now I would request Mr. Shiva to take the proceedings further. Thank you. Thank you, sir. Dear shareholders, the company had provided its members facility to cast their vote through the remote electronic voting system administered by CDSL. Facility for voting at the meeting is also provided to members present in the meeting and who have not yet voted. Members may please go to the voting page of CDSL e-voting website and cast their vote. Mrs. Swati Bajaj, Partner, Practicing Company Secretary, has been appointed as scrutinizer to scrutinize the votes cast at the meeting and through the remote e-voting. Since the AGM is being held through video conference or other audio-visual means, and the resolution mentioned in notice convening this AGM has already been put to vote through remote e-voting, there will be no proposing or seconding of the resolution. Thank you. I will hand it back to the chairman. Thank you, Mr. Shiva. Just one point I missed out clarifying. Somebody talked about loss of subsidiary. Yes, I had mentioned in my opening remarks that the German operations suffered much more than the Indian operations, and they are now getting back on track. So hopefully from third quarter of this financial year, they will be back into positive territory. So most of the losses, of course, has not been a cash loss, but substantial part of the loss has been on account of write-down of the inventories at higher cost. So I hope I've addressed all the questions. Now, I'd like to thank all of you and all the shareholders for taking this initiative to join the meeting today through video audio means. I would now authorize Mr. Shiva, the company secretary, to conduct the voting procedure and conclude the meeting. The e-voting facility will remain open for the next 15 minutes to enable those of the members who have not cast their votes and would like to cast their vote. The results would be announced within 2 working days, and the same would be intimated to stock exchanges and uploaded on the company website and CDSL. With your consent, I and other board members would like to leave the meeting and wish all shareholders a healthy and safe future. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Directors may leave, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. I will close the session. Thank you. Thank you.